Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sirkhizaracademy. Today we have the topic from the 10th class and this one is 7th unit. It's 7th chapter of this class with the name My Travel Diary Journey to the Gorakh Hill Station. मेरा सफरी रोज़नामचा गोरख हिल स्टेशन का सफ़र. First we will have this one in English and later I will explain this one in Urdu line by line. उससे पहले मैं आपको उसकी समरी बताऊंगा ताकि हम इस सबक को आराम से समझ सकें. चलें तो शुरू करते हैं वीडियो. चलें तो इसकी पहले मैं आपको इस सबक की समरी बताता हूँ. मेरा सफरी रोज़नामचा गोरख हिल स्टेशन का. इस सबक के अंदर हमें बताया गया एक लड़का है जिसकी फैमिली उससे बहुत मोहब्बत करती है और उस बच्चे को सफ़र करना पसंद होता है. उसकी इस आदत को देखते हुए उसके घर वाले प्लान बनाते हैं कि हम गोरख हिल स्टेशन पर उसकी सालगिरह मनाएंगे. ये बच्चा जो है ये शौकीन होता है अपनी डायरी लिखने का. तो ये उस डायरी के अंदर अपने उस पूरे सफ़र का जो वो स्क्रैच है वो बना के देता है कि किस तरह से उसने सफ़र शुरू किया था, पहले कहाँ गए थे, फिर कहाँ गए थे, ये सारी डिटेल है. अब इस सफ़र के अंदर वो बच्चा बताता है कि सबसे पहले वो कराची से निकले थे, कराची से, और कराची से निकलने के बाद वो सिंध गए थे जहाँ पे उनका जो मकसद था वो था उनका गोरख हिल स्टेशन जाना. लेकिन उसके बीच में वो मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए गए थे. जैसे वहाँ पर वो सबसे पहले हैदराबाद के रास्ते से होते हुए गए, कोटरी बराज से आगे बढ़ते हुए गए, फिर उन्होंने सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ पिढ़ाई का मज़ार जो है उसका भी विज़िट किया, उसके भी करीब से गुज़रे. उसके बाद वो और दूसरी दरगाहों पे भी गए और अल मंज़र के होटल पे उन्होंने चीज़ें भी खाएँ, मछलियाँ भी खाएँ. इस पूरे सबक के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली उसने ये बताया है कि किस तरह से वो कराची से स्टार्ट हुए थे सफ़र करना और उसके बाद रास्ते में उनकी मंजिलों में क्या क्या चीज़ें आएँ, कौन कौन से पॉइंट आए, कहाँ उनकी बस रुकी, कहाँ तक उनकी बस गई. बस जो है गोरख हिल स्टेशन से पहले तक गई. उसके बाद गोरख हिल स्टेशन के लिए जो पहाड़ी थी उसके ऊपर फिर उन्होंने जीप से सफ़र किया और वो ऊपर पहाड़ियों पे पहुँची. फिर उसने बताया कि गोरख हिल स्टेशन का जो मंज़र है वो कितना खूबसूरत था, कि किस तरह बादल थे आसमानों के, इतनी ऊंची जगह थी. और वहाँ पे उन्होंने एक कमरा तो नहीं मिला, उन्हें एक टेंट मिला था. उस टेंट के अंदर उन्होंने बैठकर रात का एंजॉय किया. फिर वहाँ पे लड़के थे कुछ जो उसकी हम उम्र लड़के थे, उन्होंने आग जलाई, आग के गिर्द बैठकर उन्होंने बातें की, अपनी कहानियाँ सुनाई, खेल खेले, जो बचपन की चीज़ें वो कर सकते थे वो सारी की. तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर उस बच्चे ने अपने पूरे सफ़र की डायरी लिखी है और वही हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में सुनेंगे. चलें तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं. पहले हम इसकी इंग्लिश सुनते हैं और उसके बाद उर्दू लाइन बाय लाइन सुनेंगे. My travel diary, Journey to the Gorakh Hill Station. Traveling is a way of reconnecting with nature and, most importantly, with ourselves. My trip to the Gorakh Hill Station was such experience. Knowing my love for travel, my parents broke the news 2 days before my birthday that the celebration would be held at the Gorakh Hill Station. It is situated at an elevation of 5,690 feet from the sea level and is the highest summit and a holiday resort in Sindh. I'm sure you will enjoy reading my travel accounts of Gorakh Hills and appreciate how awesome they are. We started the journey at break of dawn, in an air-conditioned bus. A group of 14 tourists welcomed us, and a glance made me realize that there were about 4 teenagers, which meant that the trip was likely to be fun. I took a seat near the window, and our long-awaited trip started from Karachi. The guide explained the journey and the route we would be taking. He also distributed flyers that had details about the resort. After crossing the toll plaza on the motorway, I turned on my Wi-Fi, wireless fidelity, to search for the route to our final destination. I checked the route on my mobile, and the GPS, geographic positioning system, showed that the area that we were crossing was Nuriabad, and that we had traveled 83 kilometers. Looking out of the window, I could see newly constructed housing schemes and smoke coming out from the factory chimneys. After traveling a little more, we crossed Jamshoro. On my right, I could see some of the mighty Chindu. Some fishermen were laying NCT3 to catch fish for the day. On the mobile application, I could that the city of Hyderabad was right across the river. The guide announced on the public address system,
that we would take a small detour and go to the Almanzar Hotel on Kotri Barrage for a quick cup of steaming hot tea and parathas. The barrage was a bridge-like structure, constructed over the mighty river. I quickly made friends during the break and was sure that the rest of my trip would be exciting. On our next leg of the trip, we took the Indus Highway, which runs along the right bank of the river. Industry cash crops are grown in this region. I could spot bullocks as well as tractors being used for farming. The bus rumbled on and soon the guide announced that we would be reaching Saiwan in a while, where we would be breaking our journey for a quick visit to the shrine of Lal Shahbaz Calendar, a highly revered Sufi saint. This visit was an incredible experience, as people from all walks of life come to the saint's shrine to pay homage. It is commonly believed that a visit to this shrine can provide healing for all types of illnesses. The spiritual atmosphere, the aromatic fragrance of incense and red roses, and the colorful spreads took me to another world. Our final destination was, of course, the Gorakh Hills, which was a good 4 hours from Saiwan. On leaving Saiwan, we were served lunch, in nicely packed lunch boxes, on the bus. The lunch comprised fish caught from the Muncher Lake, which was situated close to Saiwan. We washed it down with fresh, refreshing sugar cane juice, supplied in disposable glasses. The tour operator had arranged the lunch from Saiwan. The guide and the driver warned us in advance that the comfort of the bus drive would soon be over. At the foot of the Gorakh Hills we were transferred to a jeep for a steep, uphill drive to reach the summit. The steep zigzag 4-kilometer ride made my mother and a few elders sick, but we were well prepared to handle the problem. On reaching the peak, I felt that I was on top of the world, surrounded by steep slopes and rugged beauty. However, as luck would have it, all rooms were occupied, and we had to rent tents for our night stay. My family fixed our tent on a small flat piece of land overlooking Baluchistan in the west. This location was a perfect vantage point for watching the sunset. After a light dinner, when I stepped out of the tent, with a steaming cup of tea in my hand, I found myself under a canopy of stars, under which we lit the bonfire. We were all in a very good mood and had great fun indulging in activities such as betbotzi, Chinese whisper, sharing funny stories, and all sorts of childish games that we could think of. The sparkling golden hues of the fire, the crackling of the wood, the bright stars above, and the warmth of friends gathered around the fire made time come to a standstill. Waking up early in the morning, I wasn't aware that the best was yet to come. As I stepped out, I witnessed a sunrise that was one that one would witness in a painting or a movie, and the clouds were gradually descending all around us. It was spellbinding to see floating clouds, which I could touch, to smell the fragrances of different herbs, which tranquilized my senses, and to hear the distant bleating of sheep grazing around. I was still admiring the beauty when I heard people singing "Happy Birthday" behind me. Turning around, I saw that my parents and friends were carrying a huge cake with candles on it. Things had been planned to the last detail. A beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony. I was deeply touched by my parents' love and meticulous arrangements. The cake cutting was followed by halwa puri for all. However, all good things have to come to an end. Soon after breakfast, we packed our belongings and said goodbye to the most awe-inspiring holiday resort of Sindh. On our way back, we took a different route and traveled from the Dadamoro Bridge. The guide announced that, from there, we would cross the river Indus to go to the other bank to continue our journey. The landscape here was greener as compared to the right bank. On the way we stopped at Hala to buy some souvenirs from roadside shops. We also glimpsed the historical city of Madiari in the distance. Earlier, the guide had announced that we were passing close to Bit Shah, where the shrine of one of the world's greatest poets, Hazrat Shah Abdul Latif Baitai, is located. Finally, we crossed through the city of Hyderabad and reached the motorway on which we had traveled the day before from Karachi. This journey gifted me with new friends, abundant excitement, and fun. Overall, it was a once-in-a-lifetime experience.
How true was Ibn Battuta when he said that travel leaves you speechless and then turns you into a storyteller? मेरा सफरी रोज़नामचा, गोरख हिल स्टेशन का सफ़र। सफ़र फितरत से और सबसे अहम ये है कि अपने आप से दोबारा जुड़ने का एक तरीका है। गोरख हिल स्टेशन का मेरा सफ़र ऐसा ही एक तजुर्बा था। सफ़र से मेरी मोहब्बत को जानते हुए मेरे वालिदैन ने मेरी सालगिरह से 2 दिन पहले ये ख़बर दी कि ये सालगिरह गोरख हिल स्टेशन पर मनाई जाएगी, कि सतह समंदर से 5690 फ़ीट की बुलंदी पर वाक़ा है और सिंध में सबसे ऊंची चोटी और छुट्टियों का तफरी मकाम है। मुझे यकीन है कि आप गोरख हिल का मेरा सफ़रनामा पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और तारीफ़ करेंगे कि कितना शानदार सफ़र था। हमने सुबह सादिक के आगाज़ पर एयर कंडीशन बस में सफ़र से शुरू किया। 14 सयाहों के एक ग्रुप ने हमें खुशामदीद किया और एक नज़र ने मुझे एहसास दिलाया कि तकरीबन 4 नौ उम्र बच्चे थे। ये सफ़र मज़ेदार गुज़रना था। मैंने खिड़की के करीब एक नशिस्त ली और हमारा तवील अरसे से मुंतज़िर सफ़र कराची से शुरू हुआ। गाइड ने सफ़र और रास्ते की वजाहत की जिस पर हम गुज़र रहे थे। इसने इश्तिहार भी तकसीम किया जिसमें तफरी मकाम के बारे में तफसीलात थी। मोटरवे पर टूल प्लाज़ा अबूर करने के बाद मैंने अपनी मंजिल के रास्ते की तलाश के लिए अपना वाईफाई ऑन किया। मैंने अपने मोबाइल पर रास्ता चेक किया और जीपीओ से पता चलाया कि हम जिस इलाके को अबूर कर रहे थे वो नूरियाबाद था और हम 83 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। खिड़की से बाहर मुझे नई तामीर शुदा हाउसिंग स्कीमों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता नज़र आ रहा था। थोड़ा सा और सफ़र करने के बाद हमने जामशोरो अबूर किया। मैंने अपने दाएं तरफ अजीम उलशान दरिया सिंध के कुछ मनाजिर देखे। कुछ माहीगीरों के लिए मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। मोबाइल एप्लीकेशन पर मैं देख सकता था कि हैदराबाद शहर दरिया के बिल्कुल पार है। गाइड ने अवामी खिताब के निज़ाम पर ऐलान किया कि हम एक छोटा सा चक्कर लेंगे और कोटरी बराज पर अलमंजर होटल पर गर्म चाय के एक फौरी कप और पराठे के लिए जाएंगे। बहराज एक बहुत बड़ा पुल नुमा ढांचा था जो अजीम दरिया पर तामीर किया गया था। मैंने वक्फे के दौरान जल्द ही दोस्त बना लिए और मुझे यकीन था कि मेरी बाकी सफ़र दिलचस्प होगा। सफ़र के अगले मरहले में हमने इंडस हाईवे ले ली जो दरिया सिंध के दाएं किनारे किनारे चलती है। इस खित्ते में फसलें उगाई जाती हैं। मैं बैलों के साथ ट्रैक्टरों को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होते हुए देख सकता था। बस चल पड़ी और जल्द ही गाइड ने ऐलान किया कि हम कुछ देर में 7 पहुंच जाएंगे, जहां हमने एक इंतहाई काबिल एहतराम सूफ़ी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की ज़ियारत के लिए अपना सफ़र करेंगे। ये ज़ियारत एक नाकाबिल यकीन तजुर्बा थी क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार पर खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं। आम तौर पर यह ख़याल किया जाता है कि इस मज़ार की ज़ियारत हर किस्म की बीमारियों के लिए शिफा फराहम करती है। रूहानी माहौल और लुबान और सुर गुलाब की खुशबू और रंगीन चादरें मुझे एक और दुनिया में ले गई। हमारी आखिरी मंजिल यकीनन गोरख की पहाड़ियाँ थी जो 7 से 4 घंटे दूर थी। 7 से निकलते ही बस में अच्छी तरह पैक खानों के डब्बों में हमें दोपहर का खाना पेश किया गया। दोपहर का खाना 7 के करीब वाक़ा मंझल झील से पकड़ी गई मसालेदार मछली पर मुश्तमिल था। हमने इसे ताज़ा फरहत बख्श डिस्पोज़र ग्लासों में फराहम किए गए गन्ने के रस से गले से नीचे उतारा। टूर पर ऑपरेटर ने 7 से दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया। गाइड और ड्राइवर ने हमें पेश की खबर दी कि बस के सफ़र का
آرام جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ گورکھ کے پہاڑیوں کے دامن میں ہمیں چوٹی تک پہنچنے کے لیے ایک ڈھلوان سطح پر چڑھنے کے لیے ایک جیپ میں منتقل کیا گیا۔ 4 کلومیٹر کی تیز ٹیڑھے میڑھے سفر نے میری والدہ اور چند بزرگوں کو بیمار کر دیا، لیکن ہم اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اچھی طرح تیار تھے۔ چوٹی پر پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ میں دنیا کی چھت پر ہوں، جو کھڑی ڈھلانوں اور انتہائی خوبصورتی سے گھیرا ہوا ہے۔ تاہم جیسا کہ قسمت میں ہوتا ہے، تمام کمرے بھرے ہوئے تھے اور ہم اپنے رات کے قیام کے لیے خیمے کرائے پر لینے پڑے۔ میرے خاندان نے مغرب میں زمین کے ایک چھوٹے ہموار ٹکڑے پر اپنا خیمہ لگایا، جہاں سے بلوچستان نظر آتا تھا۔ یہ جگہ غروب آفتاب دیکھنے کے لیے بہت بہترین مقام تھا۔ رات کے ہلکے پھلکے کھانے کے بعد جب میں خیمے سے باہر نکلا تو میرے ہاتھ میں چائے کا گرم گرم کپ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ستاروں کے ایک سائبان کے نیچے پایا، جس کے نیچے ہم نے آگ جلا دی۔ ہم سب بہت اچھے موڈ میں تھے اور بیت بازی، چینی سرگشوں، مضحکہ خیز کہانیاں سنانے اور ہر طرح کے بچگانہ کھیلوں میں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے تھے میں شامل ہونے میں بہت مزہ آیا۔ آگ کے چمکتے سنہری رنگ، لکڑی کے چٹکنے، اوپر روشن ستارے اور آگ کے ارد گرد جمع دوستوں کی گرم جوشی سے وقت تھم گیا تھا۔ صبح سویرے جاگتے ہوئے مجھے معلوم نہیں تھا کہ بہترین حصہ ابھی آنا باقی ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں نے طلوع آفتاب کا ایسا مشاہدہ کیا جیسے کوئی کسی پینٹنگ یا فلم میں دیکھتا ہے، اور بادل آہستہ آہستہ ہمارے چاروں طرف اتر رہے تھے۔ تیرتے بادلوں کو دیکھنا جنہیں میں چھو سکتا تھا، مختلف جڑی بوٹیوں کی خوشبوؤں کی سونگنا جس سے میرے حواس کو سرور بخشا، اور دور چڑھتی ہوئی بھیڑوں نے میانے کی آواز نے سحر طاری کر دیا تھا۔ میں ابھی بھی خوبصورتی میں مگن تھا جب میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے سالگرہ مبارک گاتے ہوئے سنا۔ پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین اور دوست مومبتیوں لگا ایک بہت بڑا کیک لا رہے ہیں۔ مکمل تفصیل کے مطابق چیزوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ کیک کاٹنے کی تقریب کے لیے ایک خوبصورت دری پھیلائی گئی۔ میں اپنے والدین کی محبت اور باریک بین انتظامات سے بہت متاثر ہوں۔ کیک کاٹنے کے بعد سب کے لیے حلوہ پوری کا انتظام تھا، تاہم تمام اچھی چیزوں کو بالآخر اختتام ہونا ہوتا ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد ہم نے اپنا سامان باندھا اور سندھ کے سب سے حیرت انگیز چھٹیوں کے مقام کو الوداع کہا۔ واپسی پر ہم نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا اور دادو مورو پل سے سفر کیا۔ گائیڈ نے اعلان کیا کہ وہاں سے ہم اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے دریائے سندھ عبور کریں گے۔ دائیں کنارے کے مقابلے میں یہاں کی زمین ہری بھری تھی۔ راستے میں ہم سڑک کے کنارے دکانوں سے کچھ یادگار اشیاء خریدنے کے لیے حالہ میں رکے۔ ہم نے دور سے تاریخی شہر مٹیاری کی جھلک بھی دیکھی۔ اس سے قبل گائیڈ اعلان کر چکا تھا کہ ہم بھٹ شاہ کے قریب سے گزریں گے، جہاں دنیا کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک حضرت شاہ عبدل لطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ آخر کار ہم شہر حیدرآباد سے گزرے اور موٹر وے پر پہنچے، جس پر ہم نے ایک روز قبل کراچی سے سفر کیا تھا۔ اس سفر نے مجھے نئے دوستوں اور تفریح کا تحفہ دیا۔ مجموعی طور پر یہ زندگی میں ایک بار پانے والا تجربہ تھا۔ ابن بطوطہ کتنا سچا تھا جب اس نے کہا تھا کہ سفر آپ کی زبان کی کنگ کر دیتا ہے اور پھر آپ کو ایک داستان کو بنا دیتا ہے۔